Namaskar dosto, good evening friends. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly endocrinologist and you are watching Dr. KK's Med Talks. Thursdays with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 705वां 705th नॉन स्टॉप एपिसोड है. Let's have the headlines for today. Bill Gates has congratulated Prime Minister Modi for India crossing 2 billion COVID vaccinations. और ये वाकई मुबारकबाद की बात है. We are very happy, we are very proud, but it doesn't mean that we can rest on our laurels. We have to continue working hard. France, in the meanwhile, has planned a second COVID booster dose for all its citizens aged 18 to 59. तो वहाँ पे second precautionary dose अब लगनी शुरू होगी. बाकी बीमारियां भी बढ़ रही हैं and the World Health Organization has reported 14,000 cases of monkeypox across the world, including 5 deaths in Africa. Dell Technologies has created something called the Digital Life Care Platform, and this will address challenges around care for non-communicable disease on a national scale. और इसके बारे में तो हम अपने एक्सपर्ट से भी आज रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें बताएं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, ओबेसिटी क्या है और कैसे हम इसे एड्रेस कर सकते हैं. Our insurance regulator, RDAI, has given insurers the freedom to empanel hospitals for cashless treatment. So that's good. Freedom है, आजादी है, and patients will benefit. Finally, the public will benefit. Let's introduce our topic for today. बिल्कुल भारी भरकम टॉपिक है. भारी भरकम भी और समाज को छूने वाला भी, समाज के दिल को छूने वाला टॉपिक, obesity and community intervention. Now it's rightly said that disease and health are too important to be left to the doctors alone. It's everybody's right, health is everybody's right, but then preventing disease, managing disease is everybody's responsibility. And that is very true for obesity. तो आज के हमारे एक्सपर्ट से मिलते हैं. हम पहले इनसे मिल चुके हैं 2 बार. Warm welcome Dr. Madhur Verma. Sir, good evening and thank you Good for evening. having me. Dr. Verma is Assistant Professor of Community and Family Medicine at the prestigious AIIMS, Bathinda, and he has a history of working in the public health sector. He has worked at PGIMS Rohtak, PGI Chandigarh, and he has a strong interest in clinical research, medical education, and healthcare. He has been on our show before, तो हम सब लोग उनको पहले से ही जानते हैं. और आपको डॉक्टर मधुर बहुत ग्रीटिंग्स आ रही हैं. डॉक्टर NS शारदा सर से, डॉक्टर संजीव पुरी आपके बिल्कुल बगल में हैं, दसुआ से हैं. स्वप्ना जैन जी जो ओबेसिटी एडवोकेट हैं, अरुणा त्यागी मैडम, अनामिका अनु जी, डॉक्टर रमेश पाल सिंह पवार सर, एंड शशि खन्ना जी कह रही हैं वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर द सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग. अनीता डडलानी जी एंड शर्मा जी हु इज फ्रॉम SGPJ लखनऊ, ये भी ग्रीट करते हैं. सो डॉक्टर मधुर, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी इंटरवेंशंस फॉर ओबेसिटी. आप कैसे एड्रेस करना चाहें? वुड यू लाइक टू प्रेजेंट सम स्लाइड्स फर्स्ट and then we take the questions from the audience? Sir, maybe एक बार सर हम स्लाइड शुरू करते हैं और स्लाइड्स जैसे वी हैव टू टॉक अबाउट कम्युनिटी इंटरवेंशंस दैट विल हेल्प अस टू टैकल ओबेसिटी. हम ओबेसिटी की बात करेंगे अक्रॉस डिफरेंट लाइफ कोर्सेज और तभी हमको सबको आइडिया होता जाएगा कि व्हाट इंटरवेंशंस एंड एट व्हाट लेवल डू वी नीड टू टेक केयर ऑफ एंड दैट कैन हेल्प अस टू टैकल दिस प्रॉब्लम. ओबेसिटी एक्चुअली एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ क्लिनिक्स में जाके सॉल्व नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमको मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच चाहिए. सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम घर से ही शुरू होती है और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अगर पेट निकला होता है तो वो प्रॉस्पेरिटी की निशानी है. तो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम हमको तब फेस करनी पड़ती जब हम बाद में गलत रिपोर्ट्स के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं. तो हम शुरू करेंगे अपने आज के टॉपिक के लिए. तो इस कंटेक्स्ट में हमने एक स्टडी करी थी, जैसे सर आपको याद होगा, जिसमें हमने ओवरवेट एंड ओबेसिटी की प्रेवलेंस इंडिया में हमने डिपिक्ट करी थी. एक ऑलरेडी जो नेशनल सर्वे हुआ था उसके माध्यम से, जिसमें अराउंड 6 से 7 लाख लोगों का सैंपल हमने इंक्लूड किया था अपने फाइनल सर्वे में. तो उस स्टडी के हिसाब से जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है. जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो बताता है कि इंडिया में हर 3 में से 1 आदमी ओवरवेट या ओबीस है और ये पिछले सर्वे के मुकाबले जो अभी ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है. मतलब देयर हैज़ बीन अ 54% रिलेटिव चेंजेस और द प्रॉब्लम इज़ हाई इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री.
जैसा कि आप देख सकते हैं रिलेटिव चेंजेस हर जगह बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रॉब्लम को हम कंट्रोल कैसे करें? तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अम, कब से उसके लिए बात करनी चाहिए वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब हम एडल्ट क्लिनिक में बात करना शुरू करते हैं, तो हमको डॉक्टर्स बोलते हैं कि लोग पहले से ही हमारे पास मोटे आते हैं, तो हम उनको ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। फिर हमने पीडियाट्रिशियंस से बात करी, पीडियाट्रिशियंस बोलते हैं कि प्रॉब्लम हमारी नहीं है, प्रॉब्लम बच्चों के खाने-पीने में है और वो बहुत पहले से ही डेवलप हो चुकी होती है। फिर हम गायनेकोलॉजिस्ट से हमने बात करी, तो गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि प्रॉब्लम प्रेगनेंसी से पहले की है। तो आप देखें कि जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी प्रिवेंशन एक्चुअली नीड्स अ लाइफ कोर्स अप्रोच। द चेंजेस दैट विल डिटरमाइन कि जो बच्चा है वो अपने आने वाले टाइम में ओवरवेट या ओबीस होगा, वो मदर के रिस्क फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि वो प्री प्रेग्नेंट स्टेट में अपने पास इकट्ठे कर रही हैं। सो अभी हम इनकी बात करेंगे इफ़ वी गो स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले सर हम बात करें ओबेसिटी एंड प्रेगनेंसी की। तो जो प्रॉब्लम है ओबेसिटी की प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी, इट इज़ मोर लाइकली ड्यू टू द सोशल डिस्पैरिटीज इन आवर कंट्री एंड दैट हैव परकोलेटेड टू द जेंडर डिस्पैरिटीज। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में जनरली फीमेल्स जो हैं दे आर डोमिनेटेड बाय द मेल काउंटर पार्ट्स। दे हैव देयर लेस disparate socio-economic status, they have dissimilar literacy rates, then there are different socio-cultural factors that affect female more. And then comes the pregnancy part, where her feeding practices, they are drastically changed. आप ये बात आप सब जानते हैं कि हमारे देश में अभी भी औरतें आदमियों के बाद खाना प्रेफर करती हैं या उनको ऐसा सिखाया जाता है। तो हमेशा ऐसा होता है कि बहुत सारे घरों में कि जो बचा-खुचा खाना होता है, वो औरतें खाना प्रेफर करती हैं कि अपने बच्चों को पहले खिलाया जाए, अपने हस्बैंड को पहले खिलाया जाए। एंड सडनली व्हेन दिस लेडी गेट्स प्रेग्नेंट, she is overfed by her in-laws, by her parents, because she has to give birth to the new generation. And at this time ये जो एक फ्यूल ओवरलोड का एक प्रॉब्लम जो आ जाता है, लेडी उसको बियर अप नहीं कर पाती और इट एंड्स अप इन शी एंड्स अप इन मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस. So this leads to obesity that is then carried on to the different parts, later stages of her life. So obesity basically starts with inequalities at the level of gender, where men and women, they have different environment, different behavior and different biology that determines the amount of body fat that they are going to have. Then their energy expenditure and energy intake. We all know that there is a difference in how the men and women work and how they energy intake is different. So this is overall, this overweight and obesity will have an impact on the economic status, the social discrimination, the quality of life, and the mental health, as we all know. सो जैसे हमने बात करी थी कि जो प्रेगनेंसी है वो अपने आप में ही एक फिजियोलॉजिकली चैलेंजिंग सिचुएशन है। जैसे अर्ली प्रेगनेंसी में द बॉडी हैज द टेंडेंसी टू डेवलप एनाबॉलिक स्टोर्स टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड्स इन लेट प्रेगनेंसी, and in late pregnancy she has to provide fuel to the for the fetal growth and energy needs. um, so if energy mismatch के कारण the amount she is consuming and amount that she is using will have if some susceptibility in the offsprings due to the epigenetic modifications. It is epigenetic modifications, these are some type of the changes that occur in the DNA and the DNA. Uh, Also, during this pregnancy period, there is a change in the gut microbiome and a cellular inflammation, which will later have a effect on the fetus and will make him genetically more predisposed to be obese in later stages of his or her life. So, the amount of risk factors that the baby has
while he or she is in the uterus of the mother will be determining if he or she will be having increased chances of being overweight or obese in later stages. So जैसा हमने इसमें okay. So then we talk about the your favorite term, Dr. Kalra, the transgenerational karma, where we all know that anemia, blood pressure, weight circumferences, diabetes, intolerance, and other endocrinological problems. These are just not limited to one generation, and your all the risk factors that you have accumulated over the period of time will be uh, shown here only, and they will depict their effects in this part of your life only. So it is important that you maintain a healthy lifestyle throughout your life so that you have better outcomes. Now, once we have talked about obesity in pregnancy, we will be talking about the childhood obesity. So etiology of childhood obesity is very simple. The amount of calories that the child is having these days, it has increased. This is because of the unsupervised eating, lack of family meals. There is a tendency to eat outside their houses, in the cafes and restaurants, and the amount of beverage, and the actually the marketing strategies have also uh, tried to increase the size of the food that is being consumed over the period of time. So, like you can see, at our time, there was a 2 liter bottle that was available for cold drinks, and there were other 500 ml. Now the 500 ml bottle is has gradually changed its size to 750 ml. So the amount of servings that the amount of cold drink that we are going to have in one serving has gradually increased. Same has happened to the size of burger, the size of pizza. Initially, the pizza was regular bread. Now we are having the cheese loaded pizza. So the calorie intake is gradually increasing, and then the physical activity in children, it is decreasing. Now schools are having less physical education programs, and after schools there are not many options of increasing their physical activity at homes. Children prefer staying inside, and even the parents would like to have their children inside because of the safety reasons, and they are now glued more to the TV, computer, and video games. So that has increased the screen time over the period of time. Apart from all these factors, COVID-19 has been a supplementary factor that has increased the propensity of developing overweight and obesity in children. Children were restricted inside their homes due to social distancing and other uh, inhibitions. So that has led to the increase in overweight and obesity, and we are soon going to see the effects in our next surveys. Now, coming on to the obesity in adults, um, if we talk about obesity in adults, there are many factors that needs to be talked about when we are talking about obesity in adults. Like over the period of time, the access to safe and healthy foods, it has increased. The amount of energy that is being consumed has decreased. Like we all know that in India, as per our socio cultural norms, you call a person prosperous if he or she is having a good amount of big belly, and they are having good food, and that too in high quantities. So this is generally considered as taken as a general notion of prosperity. But all this is not balanced by the amount, the energies that is spent over the period of time in their day to day routine. Like पंजाबी में कहावत है कि 1950 में हमें खेत में हल जोतने के लिए बैल चाहिए थे। तो 1960-70 के बाद जब आज़ादी के बाद हमारे पास ट्रैक्टर आने शुरू हो गए, तो काम आसान हो गया, बैल का भी और हमारा भी। और आज के टाइम में हालत ये है कि हमको वो ट्रैक्टर चलाने के लिए भी और लड़के चाहिए होते हैं। तो सारे जैसे हम भटिंडा में बैठते हैं, और मैं अपने ओबेसिटी क्लिनिक में अगर हम बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं,
हम उनको बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, तो वो बोलते हैं जी हम तो सारा दिन काम करते हैं, हम तो किसान आदमी है, हमारा तो एक्सरसाइज का ही बहुत ज़्यादा काम है। तो अगर उनसे डिटेल में बैठ के पूछोगे कि एक्चुअली में काम कौन कर रहा है, तो वो यही बताएंगे कि काम तो लड़के करते हैं, हमको सुपरवाइज करना होता है। वो सुपरवाइज करते करते दो समोसे निपटा देते हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, और शाम को एमपीएस सिंड्रोम जो पंजाब में बहुत ज़्यादा फेमस है, मीट पनीर या शराब सिंड्रोम, कि most of the Punjabis here in this part of the country, they need either meat in form of anything, and then it has to be supplemented by alcohol, or at the end, if nothing is available, it should be definitely be cheese and paneer. So apart from these personal level factors, uh, what we have seen this with increase in overcrowding, the urban space and facilities for active life, it has decreased. People do want to exercise, but they don't have places to go. They may go to gym, but gyms are overcrowded, or either they are very costly, so not everybody can afford them. They can go for walking, but there are high incidence of roadside accidents, so people prefer not to go on roads. So people are left with minimal options of going for physical activities. And after this, then we have policies that are affecting regulations and marketing and subsidies. Like government is promoting, in my views, government is promoting unhealthy behavior at many places. Like in Punjab government, they have reduced the taxes on alcohol just to generate revenues. So as per a public health expert opinion, this is in turn going to increase the consumption of alcohol in Punjab. Definitely it is going to increase the revenue, but this is going to increase the consumption, that will be definitely having an impact on overweight and obesity in later stages of life. And the long term impact of this revenue generated so far will be used in the healthcare will be used in the management of these patients. So I don't think it would be beneficial in very long run. Apart from all this, there are we need to have different subsidies and regulations. Like um, we are talking about front of pack labelings on the food packs. अ, ये अच्छा होगा अगर आप कुछ भी खाना खाने से पहले अगर आप देख पाएँ कि इस फूड में कितनी कैलोरीज़ हैं, एक सर्विंग्स में कितनी कैलोरीज़ आएँगी और उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट है। वो नॉर्मली अभी विद गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस सारी कंपनीज़ ने अपने पैकेट्स पे लिखना शुरू कर दिया है, बट वो इतना स्मॉल होता है या फिर वो इतना अनक्लियर या फिर इतने कोने में लिखा होता है कि आपकी नज़र उसके ऊपर नहीं पड़ती। ऐसा किया जा सकता है जैसे सिगरेट के पैक के ऊपर खूब अच्छे से बड़ा-बड़ा लिखा होता है कि द सिगरेट इज़ हार्मफुल फॉर योर लाइफ एंड इट मे लीड टू कैंसर। So we can do the same on our food products. Why can't we just mention the amount of salt and sugar it is having per 100 grams, and how much excess it is than your RDA of a reference man? That will definitely have an impact on inhibiting the restraining the consumers from consuming excess amount. And then there are different psychosocial determinants of food intake and physical activity. So apart from the factors that we have discussed, there are other basic causes of overweight and obesity in our community. We need to have we all actually aim for complete community empowerment, and we want to have a safe and healthy food and active life. Uh, then public and private sector response to people health demands is important, and government's response in protection to public interest. Okay. Apart from all these, we have national and international commitments which we need to take care of while we are dealing with overweight and obesity. So, in my views, in today's world, we are eating what we are forced to eat. Like I already said,
कि इनिशियली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो पहले 500 ml की आती थी, अब वो धीरे-धीरे करके 750 ml की हो गई है। चिप्स के पैकेट के साइज़ रेगुलरली बड़े होते जा रहे हैं। ऑप्शंस अच्छी हेल्दी ऑप्शंस हमारे पास खाने के लिए कम होती हैं। जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, तब यू आर फोर्स्ड टू ईट popcorns and chips and donuts, and you do not get an option to have, in most of the cinemas, to have chana or other gud ki patti. You do not get all these things that will be beneficial to you. Now we'll be discussing what are the practical approaches that we can use for weight management. We start with family. Uh, so, at family level, we have to ensure that a lady is carrying minimal risk factors in her antenatal period. Like we have seen the effect of epigenetic modifications on the fetal growth and development of overweight and obesity in later part of life. So, we need to make our community aware about all these changes. And like everybody says ki most of the people in our community, they say ki you will get fat just because in the later stages of life. But if we make them aware that there is the risk factor increases several times if your mother is having risk. So none of the mothers would like to have uh, be the cause of overweight and obesity in their children. So they will definitely try to minimize their risk factors if they are made aware about all these things. Then, as per many pediatricians, first 1000 days of life, uh, this includes the 9 months of pregnancy and the rest of the days after the birth of the baby, that will definitely have an impact on the overweight and obesity in later stages of life. It has been seen that children who are exclusively breastfed and have minimal micronutrient deficiencies, they tend to be less overweight and obese. So we have to take care of all these factors, and then apart from all this, we need to decrease the screen time at a very strong notion. We need to decrease the screen time among the children. Like children today, they are just glued to their tvs, and they do not know what amount they have eaten, and when their stomach is full, they will never know. And neither the parents care about this, ki how much their child has eaten. And now when the parents are having one or two children, and they try to devote all their love and attention towards them, and they try to overload them with calories. पहले मम्मी आएंगी, वो मम्मा खिला देंगी, फिर पापा आएंगे, पापा खिला देंगे, फिर दादी को भी याद आएगा कि कुछ खिलाना है। तो ऐसा कर करके बच्चा, उसका मन हो चाहे ना हो, उसको वो कैलोरीज ओवरलोड हो ही जाएगा. Apart from all this, we are not at this moment, we are not promoting physical activity um, among our children. It is not seen as a routine habit, so we need to develop this kind of habit in children, that we need to promote physical activity. Then in schools, school play a very important role if you need to curb the childhood overweight and obesity. But here you need to sensitize the school teachers about the effect and the causes of overweight and obesity, and what implications will it have over the long time. So in this regards, like school canteens, they turn out to be a very important point where interventions needs to be done to prevent overweight and obesity. In our schools at this moment, we do not have many healthy options to eat, and like I said, children are forced to eat uh, junk foods because it is easily available. Then in a study done from in a study done from Europe, uh, they did an intervention where senior teachers, senior students, they would come and look at the lunch boxes of their junior classes, and they would tell them if it is a good option or a bad option. So this kind of positive reinforcement helped children to
bring healthy foods in their tiffin boxes. And then we need to ensure that we have regular physical activities in our schools. But for this, we need to sensitize our teachers as well as the parents, because many parents these days, they prefer not to um, take their children out in the sun in scorching heat. And then we need to also share the success stories of the transformed children during the parent teacher meetings. At community interventions, at workplace, we need to develop thing interventions for having work site physical activity, like Apple has done. Their parking station, parking car parking is like 1 kilometer away from the main offices. So the workers, they are forced to walk to their office, and this increase the physical activity. Then having the options of having standing desks and treadmills in the workplaces will also cultivate a habit of developing, increasing their physical activity. Like workplaces can have regular monitorings of the body weights, and they can give the fittest employee tag that will motivate the workers to stay fit. And some countries, they have also started incentives for regular checkups, and they are also giving extra vacations. Like I was reading yesterday that one of the country, they are giving extra 6 days vacations to the people who are not taking cigarette breaks during their working hours. So that adds up to nearly 6 days in an year. So the students who are the workers who are not regularly involved in smoking, they get this kind of extra vacations. So this is an incentive for developing healthy habits. And then at policy level, it would be better if we implement the sugar or sin tax at the earliest. So this will increase the amount of the sugar foods, the foods that are rich in sugar, and will restrain the buyers from buying them, like what we have seen at with the cigarettes. Increasing the rates of the cigarettes decrease the chances of buying them. And at this time, it is we need to get the front of pack labelings for food articles that will help to make the clients aware about the calorie content of the foods and the amount that is beyond their RDA. Government should promote that advertisements of processed foods, they are displayed minimal in public places. And we also need to curb other potential risk factors. Government should talk about promoting physical activity, like Delhi has done by implementing Rahagiri, that promoted physical activity. Also, we need to have more investment in community parks, open gyms, and obesity management clinics, so to decrease the prevalence of the overweight and obesity. Um, Apart from all this, when we are buying the house, we should mm, mm, look around the house. Actually, not in the house, but around the house. Like how much walking area do you have around your residences? So this is known as the walkability index. And in developed countries, the walkability index actually decides the price of the house, and not the area inside the house. So, conclusions, prevention is the watchword, and at this moment, we need to have a multidisciplinary approach that will involve their parents, the community, and the health providers, and also the insurance companies and the government. So, we all need to be an advocate while we are dealing with overweight and obesity. Thank you. So, थैंक यू डॉक्टर मधुर, बहुत अच्छा लगा ये चीजें सुन के, और आपने इतने सरल तरीके से, इन सच ए सिंपल वे, यू मैनेज टू एक्सप्लेन टू अस कि ओबेसिटी सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है. Would we be right in saying that obesity is the Draupadi of modern medicine? Draupadi, yes, sir, definitely.
रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेते, जब बारी आती है काम करने की तब सब पीछे हट जाते हैं। बट जी। देर आर पीपल ऑन के मेट टॉक शो जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, समझते हैं। तो राजविंदर कलसी जी पूछ रही हैं, रेगुलर ब्लड डोनेशन, इसका हेल्थ से और वेट से क्या लिंक है? मैम, रेगुलर ब्लड डोनेशन अगर आप 3 महीने में एक बार ही कर रहे हैं तो इट इज़ डेफिनेटली हेल्प गोइंग टू हेल्प द यूजर, बट effect on your overweight and obesity, it is doubtful because we are not using the amount, the fat in your body, but the blood, which will be replenished within a short span of time. So इस समय तो इसका कुछ ज़्यादा यूज नहीं है मैम। वेट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आपका हीमोग्लोबिन अगर आप ज्यादा है तो ब्लड वेट डोनेट वैसे, करने पैदल जाएंगे तो वो बात अलग है। यस, बाकी फायदे बहुत होंगे, खुशी मिलेगी। जी। मंजू शर्मा जी तारीफ कर रही हैं, डॉक्टर मधुर वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। स्वप्ना जैन जी ऐड कर रही हैं, community design should be changed and we should, just like you've said, healthier food and beverages should be made available. And ये जो availability accessibility है public places में, like railway station, airports, hospitals, and now that स्वप्ना जी आपने ये point raise किया, तो hospitals की जो canteens हैं वहाँ पे भी खूब सारा unhealthy food मिलता है, so I think we should make a beginning with hospitals and medical colleges. अभी सर किसी ने एक हॉस्पिटल की फोटो डाली थी, उनके नीचे हल्दीराम्स बना हुआ था उनके उनकी कैंटीन में, तो लोग ट्विटर पे डाला था। आई एम एक्चुअली रिमाइंडेड ऑफ फैमिली फ्रेंड जिनकी बेटी गई पूना में एमबीबीएस करने, तो उन्होंने दाखिला कराया बिटिया का पूना में। वापस आके उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कॉलेज बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं या स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। उनका ये था, उत्थे थे मैकडोनल्ड भी है कॉलेज विच, सो दैट वाज द ओनली थिंग ही कुड फाइंड गुड अबाउट हिज डॉटर्स मेडिकल कॉलेज, कि वहां पे मैकडोनल्ड्स की दुकान है। Sir, here in Ames Batinda, the first showroom that has opened up near the vicinity, in the vicinity of Ames Batinda, is McDonald's and KFC. This is the priority at this moment. सो वी एक्चुअली हैव टू बी केयरफुल। Yes, sir. ज्योतिका रैना जी गुड इवनिंग कर रही हैं आपको, और बिल्ली जी पूछ रहे हैं रोल ऑफ सिनेमन, दालचीनी का क्या रोल है ओबेसिटी में, प्री डायबिटीज में, जनरल हेल्थ में? सर, इसके बारे में मैंने सुना बहुत है, पर एज अ एलोपैथिक डॉक्टर मैं ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा कि एक्चुअल बेनिफिट्स क्या हैं, पर हाँ, जितना मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, इट विल हेल्प यू टू, इट हेल्प्स यू टू मेंटेन योर बीएमआर, बट बीएमआर मेंटेन करने से जो एक्स्ट्रा डिपॉजिटेड फैट है उस पर ज़्यादा असर नहीं होगा, बट यू विल टेंड टू लूज मोर। सो मोर एंड इट विल हेल्प इन इंसुलिन सेंसिटिविटी, तो एक्चुअली हेल्प करेगा सिनेमन आपको। पर जी, थैंक दालचीनी अच्छी क्वालिटी की लें, सारी दालचीनी सेम नहीं होती है। मिश्रा जी। जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, बेस्ट प्रोग्राम। देवदत्त जी आपको नमस्कार कर रहे हैं, और सीमा बग्गा जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, कीप इट अप सन, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। सीमा बिंद्रू जी लॉग्ड इन है कैलकाटा से। मैडम हैज शेयर्ड हर यूट्यूब चैनल हेल्दीफाई माई क्यूजीन, जिसमें बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज हैं। स्वप्ना जैन जी पॉइंट रेज कर रही हैं दैट schools and colleges have vast grounds and they can be used for walking or jogging or running if the school administration or college administration permits, then general public can use it before and after college timings. मैम, एक्चुअली इसमें कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया कि वो स्कूल और कॉलेज में फिर वो थोड़ा कुछ कुछ क्रिमिनल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो एज अ कम्युनिटी अगर वो आप उसको स्कूल को सपोर्ट करेंगे तो वो काम इजीली हो सकता है, तो उसमें ओनरशिप तो हम कम्युनिटी को ही लेनी पड़ेगी उसमें मैम। Dr. एंड Khilendra Saxena is a gynecologist. He's also logged in today, and I'm sure Dr. Khilendra, you would have found resonance with the concept of transgenerational karma, which Dr. Madhur described. मिश्रा जी आपकी पुरानी टॉक की भी तारीफ कर रहे हैं जो आपने वैक्सीनेशन पे दी थी। थैंक यू सर। गुरविंदर कौर जी एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछती हैं, एसिम्टोमेटिक 7 मिलीमीटर गॉल स्टोन, इसमें गुरविंदर जी अगर हस्बैंड एसिम्टोमेटिक है, कोई तकलीफ नहीं है, तो उसको ऐसे ही रहने दें, ऑपरेट ना करवाएं, कोई दवाई का फायदा नहीं होगा। पर जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं, ज्यादातर जो गॉल स्टोन्स हैं वो ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं, तो घी मक्खन मलाई बंद करना चाहिए। एक चीज पॉइंट आउट करूंगा, यदि आप रैपिड वेट लॉस करते हैं, ज्यादा जोश में आके डाइटिंग करनी शुरू कर देते हैं, वेरी लो कैलोरी डाइट, कीटो डाइट, एक जो पॉसिबल साइड इफेक्ट है दैट इज गॉल स्टोन्स। क्योंकि जो पित्त की थैली है उसमें जो फ्लूइड है, बाइल है, वो फिर जम जाता है, इट बिकम्स वेरी थिक, वेरी विस्कस, एंड स्टोन बनने का चांस होता है। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ।
This is a possible side effect of people who try to lose weight very fast in a short period of time. नवजोत कौर जी, अंशु सिंह जी भी आपको ग्रीट कर रहे हैं, और मिस्टर शर्मा का एक क्वेश्चन आपके लिए। सर, व्हाई डू वी गेट वेट ओबीज आफ्टर मैरिज? इज इट बिकॉज ऑफ गुड फूड कुक्ड बाय द वाइफ? सर आदमी को लगता है खाना ही खा ले वही बेटर है। अब ये डॉक्टर मधुर की जो स्माइल है, ये बता रही है कि अभी 10 मिनट में घंटी बजेगी घर पे, और फिर वो गुड फूड ऑफर्ड, whether it will be by the wife or to the wife, that we will have to check in the Verma household now. यस But सर। Sharma ji, point well taken, you are right. सर इसका कुदरत कोई फजली। साइंटिफिक रीजन है क्या वैसे? आप जब उस दिन बोल रहे थे ना कि ओबेसिटी इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, तो हम्म। मैंने अपने अपने एमबीबीएस के बच्चों से पूछा कि ओबेसिटी इज अ कम्युनिकेबल डिजीज और नॉट, तो उन्होंने हम्म। सब मेरे पे हंसने लगे, सर आप प्रोफेसर हो, आपको ये भी नहीं पता कि इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे घर में जब खाना बनता है, तो उन्होंने बोला हाँ बनता है। तो मैं कहा मम्मी ने खाना बनाया, चीज़ टिक्के बनाए, तो वो हस्बैंड को खाने पड़ते हैं कि नहीं, पापा को खाने पड़ते हैं कि नहीं? बोले हाँ खाने पड़ते हैं। मैं कहा चाहे उनका मन हो चाहे ना हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा ओबेसिटी बिकॉज ऑफ द हैबिट्स हैज बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वाइफ टू द हस्बैंड। तो उनको लगा हाँ ये बात तो ठीक हो गई है, तो ये तो कम्युनिकेबल हो गया। तो हम्म। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वाइफ को क्रेविंग्स हो रही होती हैं, तो खाना आता है घर में, वो थोड़ा सा खा के वाइफ छोड़ देती हैं, और वो बाकी सारा हस्बैंड खत्म करते हैं। बाद में जब पिन्नियाँ आती हैं, तो पिन्नी बीवी से ज़्यादा हस्बैंड खा रहे होते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि बीवियाँ तो वापस पतली हो जाती हैं, आदमी वहीं के वहीं रह जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। एंड हम्म। सर ये तो हमको सबको पता ही है कि मोर फूड मोर फैट इन द डाइट विल आस्क यू टू हैव मोर ऑफ इट, है ना? तो यस, दैट्स ट्रू। ये जो क्रेविंग है, जब आप ज्यादा शुगर खाते हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या ज्यादा फैट, एक्चुअली बॉडी को, फिर बॉडी की सेल्स को शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फैट की क्रेविंग ज्यादा होने लगती है। तो एक ये हीडोनिस्टिक साइकिल है, विशियस साइकिल, जो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। जो जी सेल्स हैं ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में, जो अफीम की एडिक्शन करती हैं, जी वही सेम सेल्स शुगर की भी एडिक्शन करती हैं। सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। डॉक्टर जी मधुर, एक आपको आदाब आ रहा है कुदरत वजीर जी से, जो आपको गुड इवनिंग कह रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग। एंड डॉक्टर आर एस चौधरी सर इज फ्रॉम करनाल, wishing you a good evening. Dr. R.S. Chaudhary sir will be happy to know that earlier Dr. Madhur Verma was consultant in Kalpana Chawla Medical College in Karnal. And जी फिर सर। हमने इनको खो दिया टू भटिंडा। डॉक्टर वीके गोयल एंड सुदेश वर्मा जी आपको थैंक यू कह रहे हैं। एंड डॉक्टर एन एस शारदा सर फ्रॉम अहमदाबाद, ये कह रहे हैं कि आइडियल इनपुट, आइडियल आउटपुट, दैट विल मेंटेन आइडियल वेट। थैंक यू एंड सर। हाँ जी। सीमा जी भी कह रही हैं कि what you have done today, this is how a doctor should work for society, and you should keep on sensitizing us. थैंक यू। वीना वीना बजाज जी पूछ रही हैं, हाउ डू आई कैलकुलेट माय बॉडी मास इंडेक्स? इट इज वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर्स। तो आपका वेट जो है उसको केजीज में तोल के उसको डिवाइड करिए अपने हाइट से 2 बारी, जो हाइट को आप लेंगे मीटर्स में। तो अगर वो 25 तो से ज़्यादा है तो ओवरवेट और ओबीस कैटेगरी, आप ओबीस कैटेगरी में आएंगे आप। लेट अस डू इट अगेन फॉर मैडम। मान लो हाँ, उनका वेट है 100 kg, जस्ट फॉर कन्वीनियंस वी आर डूइंग, जी लेट्स से 75 kg लेते हैं, एंड जी हाइट है 1.5 meters, that is 150 centimeters, that is 5 feet। तो 5 फुट और 75 किलो। तो कन्वीनियंस के लिए हमने लिए हैं, तो 75 डिवाइडेड बाय 1.5 इज डिवाइडेड इक्वल बाय टू, 1। इज इक्वल टू, 33.33 ओवरऑल सर। हाँ, सो 75 divided by 1.5 is equal to 50, then that डिवाइडेड 50 बाय you have to divide by 1.5 again, हम्म तो वो 33 बन गया, और ये ओबीज कहलाएगा। जी मान लो वही 75 किलो का जो आदमी है या महिला है, दोनों ही चलेंगे, उनकी हाइट है 2 मीटर, लेटर से 6 फुट 5 इंच। सो 100 किलो वेट लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 meters, दैट इज 50, देन अगेन डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 25। तो यदि आप 100 किलो के हैं, तो आइडियली आपको 2 मीटर लंबा होना चाहिए। एक आसान तरीका है, अगर आप ये कैलकुलेशन ना करना चाहें, तो आप सिर्फ अपनी हाइट देख लें सेंटीमीटर्स में। सपोजिंग इट इज 180, इसमें से 100 निकाल दें, बचा 80, तो 80 शुड बी योर आइडियल वेट।
That is a good way of just looking at it. यस सर, बढ़िया। राजविंदर जी सिबुट्रामीन के बारे में पूछ रहे हैं. दैट इज अ बैन ड्रग नाउ, नॉट यूज्ड एनी मोर. पहले यूज होता था. इससे सुसाइडल टेंडेंसीज थी, इसलिए बंद कर दिया. एंड डॉक्टर मधुर, appreciation from Meher Verma and Sudesh ji as well for your talks. थैंक यू। सीमा जी कह रहे हैं God bless you, and Jyotika Rana ji भी कह रही हैं that she attends regularly and these sessions regularly and it helps a lot. And actually, Jyotika ji, I'll agree with what Seema ji has said. It will help you and your family and everybody around you. सीमा जी कहते हैं that schools के बाहर हम देखते हैं parents are smoking and then they scold children के smoke मत करें. खुद स्मोक करेंगे, बच्चों को टेट्रा पैक्स लेके देंगे फ्रूटी के और चिप्स के, तो फिर ऑब्वियसली न्यूट्रिशन इज गोइंग टू गो फॉर अ टॉस. डेफिनेटली सर, इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक्चुअली अभी एक लीगल नोटिफिकेशन निकाला था कि देयर शुड नॉट बी नो सेल ऑफ जंक फूड्स इन अराउंड 500 मीटर्स ऑफ द स्कूल्स. पर अभी हमने एक स्टडी अभी प्लान करी थी, तो उसमें भी सर ये पता चला है कि किसी स्कूल के पास ऐसी कोई नोटिफिकेशन पहुंची ही नहीं है ना, वो अभी इतना टाइम लगेगा. तो गवर्नमेंट, और ये नोटिफिकेशन 2017-18 में आ चुकी थी सर. Right. So we need to work on that on advocacy. Dr. जी Pawar sir पूछ रहे हैं metformin for weight loss. It is not approved for weight loss, and the better drugs would be orlistat or off-label liraglutide or semaglutide. You can also use, Dr. Pawar sir, you can use medical nutrition therapy. High protein supplements can be used as meal replacement. They will increase satiety and actually will help you reduce weight. So any good medical grade protein supplement, one good company would be Vida Slim. You can use 2 scoops once a day instead of a meal. शगुफ्ता यास्मीन जी एक क्वेश्चन पूछती हैं, डाइट एंड एक्सरसाइज शुड बी टॉट इन मेडिकल कॉलेजेस. तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में सर? Yes sir, we are regularly doing this in our community medicine on a very regular basis. We are It's part of Shagufta ji, it's part of the community medicine subject. yes ma'am. गुड इवनिंग टू यू फ्रॉम सोनीपत, फ्रॉम ललित कथुरिया साहब, जो खुद भी एक फिटनेस एडवोकेट हैं और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं. डॉक्टर वीके गोयल गुड इवनिंग कर रहे हैं. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, ये आखिरी सवाल लेते हैं आज का. रजविंदर कलसी जी पूछ रही हैं, डॉक्टर मधुर आप बठिंडा में रहते हैं, व्हाई आर पंजाबीज मोर ओबीज? मैंने बताया था मैम, वो एक्चुअली मैम पंजाबी इतने ओबीस नहीं है. अभी अगर आप नेशनल प्रेवलेंस देखेंगे तो हम 4थे-5वें नंबर पे आते हैं. बट और एक तो हमारा खाना पीना, एमपीएस सिंड्रोम, मीट पनीर शराब सिंड्रोम, वो थोड़ा ज़्यादा प्रेवलेंट है यहाँ पे. तो हमको इसमें से कुछ ना कुछ ज़्यादा चाहिए. और पंजाबी दे आर, मतलब आपको पता ही है कि दे आर मोर ओपन हार्टेड, तो खाने पीने में ज़्यादा बिलीव करते हैं. और ऊपर से फिजिकल एक्टिविटी अभी जो है हमारी, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है. तो एक इंजन जो पहले 10-50 किलोमीटर चलता था, वो 5 किलोमीटर चल रहा है, पर पेट्रोल उतना ही पी रहा है. तो ओवरऑल उसका धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है उसकी पेट्रोल की टंकी भरती ही जाएगी. तो वही हमारे साथ हो रहा है अभी. बट नाउ पीपल आर बीइंग सेंसिटाइज्ड एंड दे आर नाउ रेगुलरली वर्किंग ऑन दिस. इंस्टाग्राम और फेसबुक आने से उनको जो फोटोज अपलोड होती हैं, तो अब उसके कारण उनको बॉडी इमेज कॉम्प्लेक्सेस आने शुरू हो गए हैं. और now the younger generation is more into gym and everything, so we will see the changes soon, but we have to work upon this. जी जिम में एक्चुअली मैं भी देखता हूँ कि इंटरेस्ट बढ़ गया है, एंड मोर यंगर पीपल आर कमिंग फॉर एक्सरसाइज. yes जो भंगड़ा, बिस्तर, बियर, बटेर, ये जो 4 चीजें हैं पंजाबी कल्चर की, उनमें से भंगड़ा तो शायद कम कर दिया लोगों ने, बिस्तर, बियर, बटेर कम नहीं किया. तो वी शुड एक्चुअली गो द ऑपोजिट वे नाउ एंड इंक्रीज आवर भंगड़ा. बिस्तर बियर बटेर, ये बढ़िया है सर. हाँ ज्योतिका जी का कि अगर हाइट है 150 सेंटीमीटर, दैट इज 5 फीट, सो आइडियल वेट वुड बी 50 kg roughly. Herbalife is actually not a good idea because it is not complete in micronutrients. तो अगर आप Herbalife लेंगे, वेट लॉस होगा, जैसे ही Herbalife बंद करेंगे वापस आ जाएगा, और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी भी हो जाएगी. Orlistat is safe. It is not very effective actually, Dr. Goel. बहुत ज़्यादा weight loss नहीं होगा, but you can take it for 6 months, 1 year, many years also. It is very safe to use. It is approved for use about 12 years of age. सर एक्चुअली हम अगर अपने डाइट पे ही फोकस कर लें, डाइट और साथ में एक्सरसाइज का ही फोकस कर लें, तो उससे बहुत ज़्यादा वजन कम हो जाता है. जैसे आपको तो याद ही होगा, मैं 95 kg से 81 पे आया था विद इन 3 months, जस्ट विद द हेल्प ऑफ माई डाइट कंट्रोल एंड माई फिजिकल एक्टिविटी. और उसमें सिर्फ मैंने वॉक करनी शुरू करी थी. अपने आप को रोज चैलेंज करना है कि जितना कल वॉक करिए, आज उससे थोड़ा सा ज़्यादा करना है. तो अगर आप इसको रोज करते रहेंगे, तो आप रोज में ग्राम्स के हिसाब से आप वजन लूज कर सकते हैं. तो थोड़ा इट सा इज डिसिप्लिन,
Yeah, जी thoda sa moderation. That's all that is required. And cow milk has less calories than buffalo milk. That is right, Mishra ji. And जी cow milk अगर आप पियेंगे instead of buffalo milk and जी instead of cream or ghee, then certainly weight will come down. यस Belly fat with the diabetes, we have good medicines for diabetes, Devika ji. Drugs of choice would be uh, semaglutide, liraglutide, dulaglutide. ये एक अलग क्लास ऑफ ड्रग्स है, इनमें से एक ही दिया जाएगा आपको. एंड दूसरा SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन, इनमें से एक दिया जाएगा. अगर आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, दे विल हैप्पीली प्रिस्क्राइब दीज एंड टेल यू हाउ टू यूज देम. तो एक्चुअली आपकी बेली फैट कम हो जाएगी. डॉक्टर मधुर, वी हैड अ ग्रेट डे टुडे, और आपकी स्लाइड्स बहुत ही सुंदर भी थी और सरल भी थी. थैंक यू They were सर very easy to understand, and we are getting multiple compliments from everyone. थैंक यू Uh, एवरीवन थैंक yeah. Before we conclude, I'd like to request Pratik, can we show a certificate of appreciation for Dr. Mazur, please? And in the meanwhile, Dr. Mazur, thank you, Pratik. In the meanwhile, Dr. Mazur, last comments from your side. क्या कहना चाहेंगे पूरे इंडिया को? वी नीड टू वर्क टुगेदर अगर आप बोलें कि ओवरवेट और ओबेसिटी जिसकी प्रॉब्लम है जो सफ़र कर रहा है या तो वो देखेगा या फिर उसका डॉक्टर देखेगा तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी और सॉल्व नहीं हो पाएगी और जैसा जैसा अभी प्रॉब्लम चल रही है उस हिसाब से इट इज़ द न्यू पेंडेमिक जो कि उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा जितना तेज़ी से कोविड बढ़ा था पर उससे ज़्यादा इम्पैक्ट और उससे ज़्यादा मार करेगा तो हमको इस समय सबको मिल के ही इस पे काम करना पड़ेगा जो लोग कम्युनिटी के मुखिया हैं वो कम्युनिटी में ध्यान दें कि कैसे अपने लोगों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए बढ़ा सकते हैं और जो पॉलिसी लेवल पे बैठे हैं तो दे डेफिनेटली हैव टू थिंक अबाउट दिस फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग्स एंड फूड शुगर टैक्सेस दैट विल हेल्प अस एट दिस मोमेंट Right. और माता पिता दो बस शुरू से शुरू करें कि अपने बच्चे को मोटा देख के खुश ना हो बस अगर वो बच्चा yes. पतला है तभी वो खुश रह सकता है जी दो तीन क्वेश्चंस और फटाफट लेते हैं. अनुपमा जी का क्वेश्चन था 5 feet 7 inches. That would be roughly 167.5 centimeters, and the weight should be around 67 kg. So 80 is a bit too much. Around 10-12 kg कम करना चाहिए. सिंपल है अपनी Uh, हाइट को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके 100 माइनस कर दीजिए उसमें से बस दिस विल हेल्प यू सीमा जी पूछ रही हैं, कैन आई टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर स्लाइड्स? मैं आपको मेल कर सकता हूँ स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा मैं आपको So Seema ji, if you just put in your email ईमेल ID आईडी in the chat box, भेज we'll दूंगा make हाँ sure that the KK Medtalk team sends it to you. One जी last question. This comes from one of my special friends, and my friend's name is Meher Verma. Meher Verma ये जानना चाह रहे हैं कि in school during recess, can I eat potato chips and burgers every day? Actually, school should take a lead in this, and they should prohibit bringing potato chips and burgers in your. Obviously, they are tasty, and you would like to have them every day, but you should not. तो इसमें स्कूल की ही गलती है अगर वो आपको रोज पोटैटो चिप्स खाने से मना नहीं कर रहा तो स्कूल्स को इसमें लीड लेना चाहिए डेफिनेटली हमको एज अ पेरेंट्स हम बताएंगे हमारे बच्चों को क्या खाना है तो हमें उनको रोज पोटैटो चिप्स और बर्गर्स नहीं भेजने But एक thank you, फ्रूट हम Meher. रोज हाँ जी Yes, thank you, Meher, for pointing this out. तो एक्चुअली फ्रूट लेके जाना चाहिए एंड हेल्दी प्लेट जिसमें चपाती या राइस हो, और साथ जी में खूब सारी कलर्ड वेजिटेबल्स एंड पोटैटो चिप्स एंड बर्गर्स मे बी वंस अ मंथ इज ओके जब कोई बर्थडे हो या कुछ हो, बट नॉट एवरी डे. एवरी डे जी इट शुड बी वही चीज जो घर पे मम्मी पापा खाते हैं. जी With this, I'd like to thank everybody for having logged in today. बहुत अच्छा लगता है सबसे बात करके, और डॉक्टर मधुर से तो बात करके और अच्छा लगता है. एंड हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है कि हम भी अपना वजन कम करें, अपना और अपनी कम्युनिटी का. जी केके में टॉक्स आपकी सेवा में हाजिर होता है रोज. मैं आपके जी साथ होता हूँ हर सोमवार और वीरवार, और अगले सोमवार हम मिलेंगे डॉक्टर कीर्ति को. डॉक्टर कीर्ति कालरा इज dermatologist, a skin specialist in Karnal, and she'll be talking about skin care during changing seasons. एंड सीमा जी, अगर चिप्स वंस इन अ वाइल लेना है, एक महीने में एक बार, देन सर्टेनली शी कैन हैव द चिप्स. छोटी बिटिया है. सो विद दिस, I'd like to thank everybody for having been with us. डॉक्टर बाय मधुर, थैंक यू वंस अगेन, एंड बाय बाय सबको बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए. शबा खैर, जय हिंद. थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर